event which is visible on a certain date, and if it is a very big event, you can be very sure that there is a lot of history behind that. And at the time of French Revolution in August 1789, there was Declaration of the Rights of Man. To oppose the very title, the Declaration of the Rights of Man in 1792, Mary Wollstonecraft, she wrote a vindication of the rights of man. Her opinion was that why only rights of man? There is a big hue and cry over women's rights, both in Britain and United States. And so we see that there are associations in America, and there is talk of suffrage in both the countries almost at the same time. So it was ultimately in 1920 by the 19th Amendment that the political rights of women were recognized. Before that, in 1916, we see Jean Rankin. She is the first woman, and she was elected to the House of Representatives in 1916. Emmeline Pankhurst, she forms her party, and she is talking about the rights of women, and especially she is talking about the voting rights. These women agitators, they were called the suffragettes. Why? Because they agitated for women's rights. In March 1917, the Russian position in the First World War was not very secure, and it was a women's movement in Russia. Their slogan was peace and bread, and it was as a result of this agitation that after 4 days, Nicholas II, who was the last Tsar of Russia, he abdicated. In 1910, Clara Zetkin, she put forward a demand. She was a member of German Social Party. She demanded that there should be one day which should be celebrated in every country as International Women's Day. अगर हम भारतीय राजनीति, भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो प्राचीन काल से लेके आज तक हर एक शास्त्र में, हर एक वेद में महिलाओं के सशक्त होने के प्रमाण तो मिलते ही हैं, साथ में उनकी समस्याएं, उनके नीचे गिरने या उनके साथ बुरा होने का भी प्रमाण मिलता है। समय बदलता जा रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, सबसे बड़ा संविधान, स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी हम महिलाओं के क्षेत्र में, महिलाओं के विकास के लिए, उनके संपूर्ण संवर्धन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और ये भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि संविधान निर्माण में भी हमारे साथ महिलाओं ने काम किया, चाहे वो हंसा जीवराज मेहता हों, बेगम अज़ाज रासुल हों, दुर्गाबाई देशमुख हों, चाहे विजय लक्ष्मी पंडित हों, अम्मू स्वामीनाथन हों, इन सब ने संविधान निर्माण में संविधान सभा का हिस्सा बनकर संविधान का निर्माण किया। अर्थ ये था कि संविधान के शुरुआत से ही उन्हें वो सारे अधिकार, उन्हें वो सारी शक्तियां प्रदान की गईं जो किसी अन्य विकसित देशों की बात करें तो उन्हें बाद में मिला। चाहे मताधिकार की बात हो, चाहे राजनीति या किसी भी क्षेत्र में खुलकर स्वतंत्र होकर स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में या नीति निदेशक तत्वों में जाएं तो समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करें, मातृत्व अवकाश और बाल्य अवस्था, बाल्य देखभाल, ये दो ऐसे बिंदु हैं जो बहुत कम लोग सोच पाते हैं। और एक अच्छे भविष्य के निर्माण में, अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए स्त्रियों को ये सुरक्षा भी दी जानी चाहिए। लीगल रिफॉर्म्स भी बहुत सारे हुए, चाहे वो दहेज पे हों, चाहे वो घरेलू हिंसा पे हों, चाहे वो रेप केसेस पे हों। निर्भया के बाद बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आए हैं। तो ये सारे लीगल रिफॉर्म्स, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, ये सारे एंड इवन वुमेन्स राइट की एडवोकेसी भी हमारे भारतीय समाज में, भारतीय राजनीति में, भारतीय विधि निर्माण में हमेशा चलती रही है। अब डिबेट उठने लगा है या ये वाद विवाद होने लगा है कि महिलाओं को हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में जब वो कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं तो वो उनको सारी सुविधाएं भी दी जाएं और उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए उनको सपोर्ट भी दिया जाए। आज कोई भी क्षेत्र, चाहे सेना का हो, खेल का हो, राजनीति का हो, इवन किचन की भी बात करें जिससे महिलाओं को जोड़ के देखा जाता है, तो उसमें भी वो बहुत आगे बढ़ गई हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर हम बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं। और एक चीज़ और लास्ट में, काम से लौट के महिलाएं काम पे लौटती हैं, यानी अभी भी हम घर से अलग नहीं देख पा रहे हैं। पुरुष समाज या संपूर्ण विश्व के लिए बस ये मेरा संदेश रहेगा कि अगर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हैं तो आप भी हमारे साथ, हमारे हर दुख दर्द में, हमारे हर कार्य में कंधे से कंधा मिला के रहिए। हम आपकी सहगामिनी हैं, हम आपके साथ हम सफ़र हैं।
मत गुलाम बनाइए। स्त्री को देवी या गुलाम की श्रेणी में मत रखिए, स्त्री रखिए, स्त्री रहने दीजिए, उसको इंसान समझिए, आपके साथ वो हमेशा खड़ी रहे। Even in the West, people deeply believed that women writers can only write love lyrics, short lyrics, and even writers like Hilda Doolittle, with whom the entire modern movement started, wrote in initials HD, not revealing her identity. Whereas, strikingly, back home in India, women question had always been central to the national consciousness. The question of women and preoccupation with the position of women was as old as a century and a half, although in academics it started somewhere in mid-70s. In the colonial period, the women questions were like the child marriage and the sati and the parda, about schooling of girls. All these were hotly debated by men. Later on, during the freedom struggle, women came out and took active participation in 1920s, 30s and 40s. But that was perhaps due to the charisma of Gandhi. And after the movement, they'll quietly slip back into the household. With the census, we came to know that women force in fields, in handcrafts, it was reducing, and the number of women force increased in government offices, in banks, in schools and hospitals, in telephone exchange. As far as the academics in India is concerned, in 1974, we had the first research center on women's studies. It was only in 1981 that we had the first conference on women's studies. Today we see that there are some very prominent publications who are taking up the women issues and doing excellent work, like Stree in Calcutta and Kali for Women in Delhi, to form a world, to create a world where women are not seen as underprivileged, as deprived, where we have social justice and equality for all women and men.